Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to the seventh session of Learning Together group. This session was by Dr. Arvind Kumar Jha, an ex Indian Forest Service officer, now a lawyer, writer, and speaker. The presentation by Dr. Jha is about the implementation of the Forest Rights Act 2006 using geoinformatics in Maharashtra state of India. While dealing with the subject, he covered a broad spectrum of pertinent issues related to conservation, sustainability, and also of forest management and governance. The overall session, along with questions and answers, was very interesting as one could hear many anecdotes from his vast experience. Please sit back and enlighten yourself with the contents of yet another brilliant session. So, good evening, everybody, and thank you so much for giving me this opportunity to uh, have a session here and talk with you. This is about an act, that is a Forest Rights Act. Its name is very long, but in short, we call it Forest Rights Act, which basically is supposed to recognize and vest rights in certain types of forest dwellers. So we'll come to that later on. It's a very interesting act, and it was supposed to be very good in the sense that it had the objective of empowering people, empowering the local people, and the tribals and the forest dwellers. Uh, I was Commissioner Tribal Research Training Institute when this act came. That was in 2006. And since I was a forester, I was in the ट्राइबल डिपार्टमेंट सो गवर्नमेंट थॉट के ठीक है इनको दे देते हैं ये इम्प्लीमेंट करने को सो इट केम टू मी अदरवाइज इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वाज द लाइन डिपार्टमेंट इफ यू नो about governments there are line departments and the functional departments. So functional part is like the research, training, etc. But it was given to me for implementation, and that was a great chance for me to really do something good. At least I thought so. And more so because I knew forest, I knew forest rights. And I also had, fortunately, a long association with tribals in Jharkhand. My father was also a forest officer, so we have seen tribals and their culture right from our childhood. So this much in the beginning. I'll go to the next slide. Hope it moves. Why it's not moving? Okay, you have to go to that window and then select the slide, then it will move. Yeah, right. Yes, it has moved now. Thank you. So a bit about the forest rights, and first the rights. What is a right? You see, rights are a kind of an authority, almost you can call it authority, to use a particular resource in a particular manner. In short, this is the right. But since rights are legal, therefore, whenever rights are to be recognized, it has to be done with utmost clarity and care. And there is always a law and procedure whenever there is a opportunity for the government side to assign certain right in favor of somebody. So that much about the right. And every right has to have two components. One is the nature of the right and other is the extent. यानी कितना और किस तरह का, ये दो तरह की चीजें जो हैं वो right के साथ embedded हैं. Because these two things are very important for sustainability of the right. One. And they are also important from the point of view of sustainability of the resource on which that right has to be operated. Like a forest. If from the forest you allow certain person to take out a certain kind of forest produce, suppose mahua. So how much mahua is to be taken per year so that it does not eat into the capital? That means the amount that is produced every year. So that extent has to be fixed right in the beginning when you are fixing the right. So these two components are also
very much present in this particular act. So this act basically says that the forest rights are supposed to be uh, vested in the two categories of people. And those two categories are, one is the forest dwelling scheduled tribe, जो जंगलात में रहते ही हैं, not somebody who is working in a place like Ranchi or maybe Mumbai or Pune, but he also has some kind of a say forest land under cultivation in some forest area. He doesn't get entitled. He doesn't become entitled to the right. So one is forest dwelling scheduled right tribe, and other is other traditional forest dwellers, OTFD we call it short in short. And these OTFDs are also non-tribals, but who have been staying in the forest for 3 generations or more. And the common condition for both these categories of people is that they have to be dependent for their bona fide livelihood needs, for their survival, for their sustenance. These are the basic categories or rather qualities that are required to be met. And obviously, from this, you must have understood that this act is meant only for those people who are really poor, the poorest of the poor, and who are totally dependent on the forest, land, and forest produce. So this was meant for such people only. Now the obligation is there always whenever there is a right and there is a resource. So the resource manager, suppose the forest department, so he has to manage the resource in such a way that the resource grows to the extent every year to meet the needs of the right holders. And the right holders also have to be disciplined so as to use only that much of material which will not really make that kind of produce going down in terms of production. So sustainability is the basic thing in both these cases. And one fundamental thing that has been actually laid down by the High Court of Delhi, which says that charity beyond law is cruelty to others. आप अगर किसी को एक राइट दे रहे हैं, ऑब्वियस है कि उस जगह पे किसी और का भी राइट कुछ ना कुछ होगा. आपका हमारा राइट भी है वहां पे, बिकॉज हम भी सांस ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी वहां के पानी, हम भी वहां के वाटरशेड से डिपेंडेंट हैं, and therefore we are also stakeholders. But the act says that certain rights have to be given to some people. Okay, you give it, but those people who are not entitled to it, they cannot be given, and if it is given, that means it is a cruelty to us. So cruelty to all other stakeholders. That is the point. Now, this act, interestingly, covers both the aspects. One, the recognition of rights, and second thing is to make the right holders responsible, empowered to handle the sustainability issues. That is the broader component of this act, which is very important. And as we go ahead, we'll find that that is the aspect which normally is not being taken seriously by the implementers. Rather, चूंकि हमारे यहाँ पे चलता है कि भाई जमीन मिल रही है, लैंड पे राइट मिल रहा है, सो पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक कि हमको किसी तरह से मिल जाए, मगर उसके बाद की जो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पे लोग ध्यान नहीं देते. Not just the right holders, but the people who are implementing the act. And the implementer here is the tribal department. The revenue department and forest department, they are the committee members in the decision-making committees, but the main nodal agency is the tribal department. So that is about this basic framework. It talks of many types of rights, 13 types of rights. Some of them are individual forest rights. जैसे मैं कहीं पे खेती कर रहा हूँ और बहुत सालों से खेती कर रहा हूँ और उसके लिए कट ऑफ दिया हुआ है डेट, which says that on 13/12/2005, 13 दिसंबर 2005 को अगर वहां पे आप खेती कर रहे थे और अगर वहां पे आपका कब्जा था उस जमीन पे, उसी तरह से 1 जनवरी 2008 को अगर आप खेती कर रहे थे और कब्जा था, तो आप उस इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट ऑफ खेती के हकदार हैं. इफ नॉट, यू आर नॉट. That means anybody who has gone to the forest area and he started cultivating after
13/12/2005, is not entitled. So there is a very specific criteria given here to say that they have used the term, they want to have the historical injustice uh, remedied. Similarly, there are community forest rights. Community forest rights are like rights of collection of bamboo, जो कि ग्रुप लेके जाता है, या मैंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, महुआ है, हिरडा है, आपके वेरियस काइंड ऑफ प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट में होते हैं, वो ग्रुप में लोग लेके जाते हैं और लाते हैं. They are community forest rights. Then there is a right on community forest resource. That means some group, some community, if they have been managing a certain forest land or forest patch, then they can also be vested with the right to manage that land. This is the third type. And then it also talks of facilities under the section, under this. I don't want to go into the section, but it basically says that if there are right holders in a village, but if that village does not have a school or maybe a water body or irrigation, etc., etc., for that there is a section which says that these facilities can be created under this act. So you can see that the parameters which are covered here, they basically take care of the needs of the most deserving set of people. That is the forest dwelling scheduled tribes and the other traditional forest dwellers. But it also has talked about the wildlife conservation. And it says that in case there is a forest patch where it is established that the forest, the wildlife and the local people, the tribals or the other traditional forest dwellers, if they cannot coexist, that means there are problems of, say, man-animal conflict, or there are, say crop is being eaten up by the wildlife, then you can always shift them outside, shift the local people outside. And then that area becomes a critical wildlife habitat, wherein nothing other than the wildlife will survive, and it cannot be diverted for any other purpose anytime. And the last, of course, I have already talked about the empowerment of the beneficiaries, which are the forest right holders. Now, it looks very simple, the act as such, and boring also. But point is, when you go to implement it in the field, you have to talk to the people, you have to talk to the forest, you have to talk to the wildlife, and various other stakeholders. NGOs are there, very powerful NGOs in favor of tribals. And there are also some NGOs who are working for the interest of conservation, forest conservation or wildlife conservation. They also come up as a stakeholder, apart from the departments and the politicians, of course, the local leaders. Now, when you go to the field with this kind of an act, the general mindset that is there is that कि अरे यार छोटी सी जमीन दे देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला. That is the most common kind of logic given by the politicians. First of all, they will say, अरे सर ये 2 एकड़ है, क्या होने वाला इससे. And this punctured vehicle, punctured tire basically depicts that. जहाँ पे कि एक नया ड्राइवर था, उसके पंचर हो गई गाड़ी, एंड देन ही कॉल्ड द बॉस, सर गाड़ी पंचर हो गई. बोले क्या हुआ? बोले नहीं सर, बाकी पूरा टायर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एक छोटा सा पोर्शन में जो है हवा निकली हुई है. बट द पॉइंट इज दैट इट कैनॉट मूव बिकॉज दैट स्मॉल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज not allowing the whole tire to really work, function. So that kind of a mentality exists, especially in terms of the forest resources, when they talk of giving as much as possible the forest rights, etc., to people. Another field situation, a lot of writing here, but not very difficult. One is that the opinion builders, that includes all these netas and all, they think that Forest Right Act is something with which everybody can be sort of allowed to have certain kind of right, etc., without knowing that it is meant for only 2 categories of people, and they also are supposed to be very poor people.
and not the richer ones. The authorities, the implementers, they have a mindset of which is target oriented. ऊपर से chief secretary से लेके cabinet secretary तक, they keep on taking meeting and they'll say how many numbers, how many in this district, why you are very slow, etc., etc. So they feel कि अरे यार चलो निकालो इसको जल्दी केस कर decide करो. So quality suffers. That is what is the issue here. Then at village level, this act has a very interesting kind of color. At the village level, there is no government servant involved in the committee. He is not a member of, no government servant is a part of the committee, which scrutinizes the claims. So it's highly democratized at the village level. And that committee is chosen by the Gram Sabha, rather elected in fact. After that, the issue comes up that that very big group of people, every village will have 11 to 15 such people who will form the committee. And imagine we have about, say, 14,000 villages multiplied by 15. So many people have to be empowered, made aware of the act, the process, the examination of the evidences, which is stronger evidence, which is not, and all those things. It's a big task. But democratization did this. Then there is also a lack of expertise for examining evidence, etc. And that is a real challenge in the field. Rather, that was, so far as Maharashtra is concerned, we have already gone through that process. And we'll tell you how we try to remedy all those problems. Then verification of existence of cultivation and habitation on a back date, 13 December 2005. Even today, if there is a claim, we have to find out the evidences that on 13 December 2005, there was occupation of that man on that land and he was also cultivating, which means it opens a scope for illegal encroachments if they are not able to be really verified by whatever instrument we have of verification. And it really started giving a lot of problem in terms of the fact that many people started encroaching, not just on their own, but even the politicians, the leaders, local leaders. They used to go and tell कि भैया अरे यार encroachment कर ले मिलने वाला है, because they knew that there'll be a lot of difficulty in finding out as to when it was really encroached and whether it was not encroached before 13 December or not, or what. Then availability of evidences for genuine remotely placed claimants. That was the real problem. And I'll give you a story on this because when I tried to bring in the satellite image-based verification of the claims, the first person to oppose it was my minister, the Minister of Tribal Affairs. I went and showed him कि सर ये देखिए ऐसे ये सैटेलाइट इमेज है, इस पे ये दिख रहा है, इस पे तो पूरा जंगल है और यहाँ पे लोगों ने क्लेम कर रखा है, so it cannot be given. When I showed him 10-15 of such to justify कि मैं क्यों लाना चाहता हूँ इस satellite based system को, which is the geoinformatics, he was slightly upset in the beginning but very upset in the end. He said, अरे यार झा साहब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी खराब कर रहे हो, मैं तो लोगों को बोल के आया हूं कि मिल जाएगा. So I use this particular point to tell him कि सर जो सबसे रिमोट एरिया में जो बंदा बैठा हुआ है, he doesn't have any paper to show that yes he was an occupant and a cultivator of a particular piece of land before 13/12/2005. उनके पास कोई पेपर ही नहीं है, वो बेचारा लंगोटी में है, जी रहा है, किसी तरह से चल रहा है. And even the forest department does not always record the such cases, because हर नया फॉरेस्ट गार्ड जब वहां पोस्टिंग होती है तो वो जाकर के अगर ईमानदारी से करेगा सारे केसेस को तो उसके ऊपर चार्जशीट हो जाएगा वो बंदा, उस डर से कि लोग कहेंगे अरे यार तुम्हारे पीरियड में हुआ है. एंड इट एक्चुअली हैपेंड इन वन ऑफ माय सीनियर्स केस. हमारे सीनियर एक मजूमदार साहब थे, एंड वो जब अमरावती में पोस्टिंग हुई तो उन्होंने कहा यार हर साल फॉरेस्ट फायर लगता है, इस साल एवरी फॉरेस्ट फायर मस्ट बी रिकॉर्डेड.
बड़ी ईमानदारी से पूरे डिवीजन ने, पूरा हर गार्ड ने किया. एंड ही सेंट अ बिग रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि साहब हमको इतना रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज द फॉरेस्ट इज बर्निंग एवरी ईयर, सो मच ऑफ फायर इज देयर. और गवर्नमेंट से सीधा उनके ऊपर शो कॉज आ गया. ये भैया लास्ट ईयर तक का फिगर तो बोल रहा है कि वो 312 थे या 415 थे, ये इसी साल तुम्हारे 6000 हो गए. इसके मतलब तुम, you have no control on the guards, you have no control on the forest fire fighting system. So उस डर से people don't actually record the evidences. हमने कहा सर उनको आपको देना है कि नहीं देना, ये बताइए. If you want to exclude them from the benefit of this act, मैं सैटेलाइट इमेज का सिस्टम वापस लेता हूँ. That minister was also a tribal, and so he said नहीं नहीं जहां साहब चलो, let's do it. And that was the first hurdle which was removed from this use, the implementation. Then the biggest problem in this act is that this is distinguishing between decision by majority and decision on merit, जो हमारे देश में हर लेवल में है. लेट अस बी वेरी फ्रैंक, नाउअडेज डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि एक से एक डिसीजन हम लोग बिकॉज ऑफ मेजोरिटी पे ले लेते हैं, बट मेरिट्स कहीं पीछे छूट जाता है. सो दिस वाज अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम हियर, कि वो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हमको मेजोरिटी में भले ही हो, क्योंकि एक कमिटी में 6 लोगों की कमिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड देन सब डिविजनल लेवल में. इवन देयर the merits have to somewhere be brought into the system of decision making, and that was a big challenge. एक और रहता है गांव वालों का बेचारे, ठीक है, स्पेशली फॉर कम्युनिटी राइट्स. ये चेक कितना सही है पता नहीं, बट आई गॉट इट फ्रॉम द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. इसमें उन्होंने लिखा है किसी ने, पैसे कितने निकालने, तो सारे निकालने, रुपीज सारे. ये कोई मनीष भाई है. एंड दिस गिव्स मी a sort of I can say कि फीलिंग कि इसी तरह की चीज गांव में होती होगी या होती है. जबकि मान लीजिए आपने कम्युनिटी राइट दे दिया कि ठीक है आज से ये सारे महुआ या सारे तेंदुपत्ता या ये सारे साल सीड तुम्हारे हो. सो व्हाई नॉट टू टेक एवरीथिंग आउट एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि हम लोग को ज्यादा फायदा हो सके, विच इज कॉमन, इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी. सो इस चीज से भी ग्रसित है हमारा ये पूरा सिस्टम. तो इसीलिए भी मैंने कहा कि एक्सटेंट लिखना बहुत जरूरी है हर एक राइट्स के साथ, कि आपको कितना अलाउ है पर ईयर. सो दिस वाज अनदर चैलेंज. एंड द मोस्ट ऑब्वियस माइंडसेट इन द फील्ड इज कि भैया हमारे साइड में इस बोट में बॉल नहीं है, नोइंग फुली वेल दैट वी ऑल आर सिटिंग इन द सेम बोट. तो कुछ दो लोग मान लो ये फॉरेस्टर्स हो सकते हैं कि जो बचा रहे हैं कि गलत ना हो, लेकिन बाकी कुछ मेंबर्स हैं, दे आर सेइंग अरे यार हमारे साइड तो है नहीं, एंड नॉट पर्टेनिंग टू आवर डिपार्टमेंट. एंड दैट हैपेंस. जिन्होंने भी डिपार्टमेंट देखा है गवर्नमेंट का, इट हैपेंस कि भाई एक कहीं ना कहीं एक द पॉलिटिक्स विद इन ब्यूरोक्रेसी इज परहैप्स एनी टाइम और मेनी टाइम्स वर्स देन द पॉलिटिक्स आउटसाइड. नाउ to solve all these issues and also to keep my conscience clear and also my stand clear, because जब मैं यहाँ पे मेरे पास जब आया तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे मित्र थे उन्होंने कहा अरे यार ये तो गया ट्राइबल डिपार्टमेंट गया, फॉरेस्ट का भले ही हो, ही विल फेवर द ट्राइबल्स. और ट्राइबल डिपार्टमेंट सोचने लगा कि भैया ये तो पुराना, इसका दिल जो है फॉरेस्टर वाला है, सो ट्राइबल को कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला है. सो आई हैड टू बी अदरवाइज ऑल्सो become somebody who had to use the most objective system, and I tried to do that. ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ी लोगों के साथ, बिकॉज मैं जहाँ पे गया ट्राइबल डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जीआईएस का मतलब लोगों को उस समय नहीं मालूम था. मीटिंग में मैंने एक बड़ी मीटिंग में जीआईएस का नाम लिया तो बहुत सारे हाथ उठ गए, अरे साहब मालूम है मालूम है. हमने कहा क्या भाई? बोले जीआईएस मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम. हमने कहा बहुत सही है. So they didn't know that it is geographical information system. So we started from that level, and obviously we had to engage all the stakeholders with transparency. Lot many meetings were held. It create
system, a transparent technology, and also a properly placed implementation and monitoring system. It was based on formats, जिसके लिए there was a lot of criticism. बोले तुमने ब्यूरोक्रेटाइज कर दिया पूरे सिस्टम को भाई, ये क्या फाइल और ये सारे फॉर्मेट्स. हमने कहा सर बाद में कोई ना कोई देखने वाला तो होना चाहिए, सही है गलत है. हाउ विल यू नो? एंड देयरफॉर दैट काइंड ऑफ a red tape is important. So which was gradually agreed to by my seniors also. And then carrying out capacity building, which was the most important thing. Difficult also, जैसा मैंने आपको बताया इतने स्टेक होल्डर्स तरह तरह के थे, वो किया हम लोगों ने. इसका जो बेसिक सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं ये फॉरेस्ट राइट कमेटी होती है गांव में, जो कि रिसीव करती है क्लेम को, फिर उसको एग्जामिन करके ग्राम सभा में देती है, जो रेजोल्यूशन पास करता है. पूरा गांव सभा बैठना चाहिए. SDLC सब डिविजन लेवल कमेटी में there are 3 members, revenue department, forest department and tribal के, and there are 3 from the panchayati raj systems. Then वहां से पेपर जाता है DLC को, which is the district level committee, where the collector, the deputy conservator of forest and the tribal departments officer, they are from the government, and there are 3 panchayat raj samiti people, they are also members. So 6 लोगों की membership member होती है, members होते हैं इसमें. And SLMC is state level monitoring committee, which is a big committee which oversees all the works that are being done in the state. Now what we had to do with the concurrence of the minister, हमने एक वेबसाइट बनाया जिसमें सारे इंफॉर्मेशन क्लेमेंट के बारे में, लैंड के बारे में, verification process के बारे में, everything was there. Anybody could go and see that what's happening. And we shared the password also with n number of people, including the government servants, including panchayati raj people, different departments also. Then there was a web-based SMS alert system to monitor कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर गलत हो रहा है तो यहाँ से SMS चला जाता था, because we had a unit working in the tribal department which was taking samples out of whatever case was decided and examining them from the point of view of their compliance to the satellite image based evidence system. उसके लिए हमने एक छोटा सा, you can't call it software, it was an application, you can say, we called it TRTI VGIS, Tribal Research Training Institute. VGIS जिसने बनाया उसका इनिशियल्स था. उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. लेट मी सी कितना वक्त है हमारे पास अभी. Am I? Okay. We have just spent 30 minutes, so yeah, sufficient. Right. So but I have to because कहानियां सुनाने में तो मैं सुबह तक कर दूंगा, लेकिन so yes. Right sir. So इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हमने इसमें I wanted to get a software done. सरकार में जैसे होता है, हमने टेंडर्स बुलाए, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख ऐसे मांग रहा था उस जमाने में. That was in 2008. But there was we were also employing data entry operators at the rate of 7 to 10,000 rupees a month. उसमें एक बंदा है एप्लीकेशन किए हुए, and he had done MSc in geoinformatics. हमने कहा यार तुम इसमें क्यों आ रहे हो, यू आर जियोइंफॉर्मेटिक्स मैन, MSc किया हुआ. बोला सर जियोइंफॉर्मेटिक्स अभी कोई नहीं समझता इधर, आई एम नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, सो लेट मी एटलीस्ट स्टार्ट. आई सेड कि एक ही बेसिस पे तुमको मुद्दे पे दूंगा, अगर आप हमारे लिए एक छोटा सा इस तरह का बना सकते हो सॉफ्टवेयर, जिसमें हम जब देखें तो कंप्यूटर के ऊपर लेफ्ट साइड में मुझे 2005 के इमेज, सैटेलाइट इमेज के ऊपर लैंड का, जो भी लैंड जिसने क्लेम किया है उसका एक GPS का पॉलीगॉन दिखे, और उसी में राइट साइड में मुझे 2008 के इमेज पर, सैटेलाइट इमेज पर पॉलीगॉन, सेम पॉलीगॉन, ताकि हम आंखों से ऐसे ही निकट आई से हम पहचान सकें कि पहले जंगल था अभी नहीं है, या क्या लैंड यूज था अभी क्या.
He said, sir, I'll definitely be able to do it, and you won't believe he did it in 3 months. And उसके साथ भी इंटरेस्टिंग ये हुआ, fortunately we got an award for this application from government of India, and where I forcibly took all the workers जो हमारे साथ काम किए थे, जिसमें वो भी बंदा था, वो जो डेली वेजर काइंड ऑफ ए थिंग, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही इज नाउ वर्किंग इन जर्मनी. सो दैट वाज अ जबरदस्त पॉजिटिव थिंग फॉर हिम, बट ही डिड अ एक्सेलेंट जॉब. बिकॉज एक बार ये बन जाता है तो फिर आपको क्रिटिसाइज करने वाले बड़े लोग रहते हैं कि भैया या कहीं से गलती निकाल दो तो फिर कल से ये सिस्टम बंद हो जाए. बिकॉज दिस सिस्टम हैड द बिगेस्ट एडवांटेज इन फेवर ऑफ ऑनेस्ट, राइट, एलिजिबल पीपल, और जो गलत थे वो बाहर हो रहे थे. सो लाजमी था कि कई गलत लोग जो है मिल करके दे विल बिल्ड अप सम स्टोरीज एटसेट्रा एटसेट्रा. Then we also created pro forma based claim verification system, जैसा मैंने बताया, and it was done deliberately because we wanted to have some record or the other, ताकि आज भी आप चाहो तो हमारे महाराष्ट्र के किस एरिया में किस बंदे का किस तरह से प्रोसेसिंग हुआ है, you can get it in RTI and see whether it is good, it is correct or not. Then repeated trainings, as I told you, and repeated trainings में GPS वगैरह भी ट्रेनिंग में हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया पूरे स्टेट में. एंड उसकी कहानी ये है कि जब ये थोड़ा चल पड़ा तो कई एनजीओ नाराज हो गए. दे वेंट टू द सीएम और उन्हें कहा कि साहब ये झा साहब ने कोई एक मशीन दे दी है, वो फॉरेस्ट वाले लेके घूमते हैं और जहां मन जितना है लोगों को एलिजिबिलिटी उससे कम नापते हैं और बहुत ही असंतोष है पूरे राज्य में, तो या तो ये सिस्टम हटाइए या झा साहब को हटा दीजिए. आई डोंट नो, समहाउ द सीएम वाज मोर टॉलरेंट देन मेनी ऑफ द करंट सीएम्स, आई मस्ट से. तो उन्होंने बुलाया, मीटिंग बुला ली, मुझे भी बुलाया, बोले झा साहब क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा कुछ नहीं सर, जीपीएस से मैं मेजरमेंट करवा रहा हूँ. तो बोले व्हाई इट इज इन द हैंड्स ऑफ फॉरेस्टर. मैंने कहा साहब उसको कोई भी पकड़े, आप या हम या कोई भी पकड़ ले हो तो तीसरी आंख है, वो सैटेलाइट को सुनता है, हमें आपको सुनेगा ही नहीं. तो उन्होंने एनजीओ की तरफ देखा, क्यों भाई, तुम तो बोल रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसा चाहता है वैसे ही उसमें आता है इमेज. तो फिर बहुत सारे, देयर वर एटलीस्ट 15-16 एनजीओस के रिप्रेजेंटेटिव्स. दे सेड नो सर वी डोंट वांट, एंड ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का थोड़ा सा रहता है. सो ही सेड व्हाट अल्टरनेटिव यू हैव झा, वी वांट टू क्लोज इट. हमने कहा सर क्लोज करने की जरूरत नहीं, किसको सीखना है हम सिखा देंगे 3 दिन में. सो हमने ट्रेन किया, हमने कहा एनजीओ को सर बोला कि भैया आप लोग जिस जिस एरिया के हो अपने बंदों को भेजो, ट्रेनिंग शुरू. गांव के लोगों को, ग्राम सभा के सरपंच को, हमने कहा जिसने भी 7वीं पास किया है वो आ जाए, वो सीख ले. एंड अकॉर्डिंगली देयर वर 1 लाख पीपल हु वर नोइंग अबाउट जीआईएस, जीपीएस, पॉलीगॉन बनाना कैसे है. एंड द विलेजर्स बिकेम सो हैप्पी. जिन्होंने अपने जमीन की मौज माप करवाई होगी उनको पता होगा कि मौज माप कराना क्या कठिन काम है जीवन में, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं. अब उन्होंने देखा कि यार ये तो मशीन ऐसी है, इसको लेके घूम गए और इसमें इसका हमारा पूरा बाउंड्री आ गई, और ये हमने एक सिस्टम जो बनाया था उसमें, और जो सिस्टम हमने बनाया था वो ये हो गया है, उसमें एम्बेडेड हो गया ये पूरा. सो विदाउट पेइंग एनी मनी, विदाउट एनी करप्शन, all this happened, and so it was so well accepted by the villagers कि फिर इस सिस्टम को उखाड़ पाना कठिन हो गया लोगों के लिए. So that was a very interesting way of establishing something which I wanted to. Maybe God helped me. Similarly, जब कलेक्टर लेवल में इसका इशू आया कि साहब वो कलेक्टर साहब लोगों के पास है सैटेलाइट इमेज का सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड कि भाई ये होना चाहिए सर, क्योंकि उनके पास भी जो प्रेशर आता था, किसी दिन कोई आके खड़ा हो जाए नेता, अरे भाई हमारी ये 10 आदमी की लिस्ट है, इनको दे देना. तो दे यूज्ड टू जस्ट शो देम दी सैटेलाइट इमेज का के ऊपर उनका ये पॉलीगॉन, और बोले कि भैया इसको कैसे दें बताइए. सो दे वर ऑल्सो सेफ फ्रॉम लॉट ऑफ प्रेशर. So that was another great thing that happened just because of this small geoinformatics intervention. We bought 500 Garmin GPS machine. Maharashtra is a very big state, and ये machine उस समय that was the best. It had 2.5 meter of resolution.
सो इट वर्क वेरी वेल। और हमने जो सैटेलाइट इमेज भी खरीदा था, विच वॉज bought from NRSE, नाउ इट इज NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। उनका भी जो कार्टोसैट लिया था हमने, कार्टोसैट 1 इमेज, दैट वाज आल्सो 2.5 मीटर रेजोल्यूशन। सो थिंग्स मैच्ड वेरी नाइसली बाय गॉड्स ग्रेस। एक उसमें फिर ये करना था हमें कि वो जमीन की और उस आदमी की आइडेंटिटी को कनेक्ट करना था। सो दैट वाज आवर फर्स्ट, यू कैन से, लव विद आधार। दैट वाज आवर आधार। हमने 13 डिजिट का एक कोड बनाया, and every applicant had 13-digit code which was fed into the machine, GPS machine, and that used to come out in the final product, कि वो नाम उसका ट्राइबल है कि नहीं है, क्या नहीं, वो सारे along with measurement, along with his map, everything used to come in the printed form. So ये 13 डिजिट वाला जो था, जिसमें पहला 2 डिस्ट्रिक्ट था उसका कोड में, बाद के तालुका, देन विलेज, उसके बाद नाम। फॉर्चुनेटली एक भी ये कॉपी एक दूसरे से मर्ज नहीं हुआ, एंड सो इट वर्क। वी हैड 3,38,799 क्लेमेंट आईडीज जिसके साथ उनकी जमीन अटैच थी, एंड दिस वाज द फेस ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, यू कैन कॉल। तो इसमें बेसिकली गांव वाले या कोई भी जीपीएस करते थे, वो लेकर के एसडीओ के कंप्यूटर में उसको अपलोड करते थे, वहां से प्रिंट आउट निकलता था, प्रिंट आउट में आ जाता था ये इस तरह का पॉलीगॉन आ जाता था, एंड दैट पॉलीगॉन कुड बी uploaded on the satellite image. This was very simple, and it started working at the collector's level. Anybody could take it out from that website. It was working very fine, and इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है डिटेक्ट हुए, and they were cancelled. आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जंगल है, राइट साइड में काटा हुआ है। गढ़चिरौली का आप देखिए कि उसमें पार्ट में जंगल था, वो भी उन्होंने नाप लिया था अपने लिए, वो भी, दैट आल्सो कुड बी checked. So there was a lot of checks that happened and a lot of forest that was saved. And सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो आगे सोच रहे थे कि हम तो अब आज नाप लेते हैं और कल को मिल जाएगा, वो सब डिस्करेज होने लगे। So flow of ineligible claims slowed down, and encroachment in anticipation of forest rights was discouraged. That's what was the biggest positive point of this. इसको हम बाद में we could use it on Google Earth image also. That was the plus point. और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि किनारे किनारे वाले जितने हैं सबको तबीयत होती थी कि भाई थोड़ा ज्यादा नाप लो। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो वो बहुत मुश्किल था उसको अब वीड आउट करना। बाद में इस पूरे काम को जो मैंने 3 लाख में से 43,000 सिलेक्टेड केसेस को, या यू कैन से जस्ट सैंपल्ड केसेस को एग्जामिन करवाया कि कितना हद तक सही रहा। अबाउट 7% वाज द एरर, बट वी आल्सो फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, कि जैसे कुछ लोगों ने गलत जो क्लेम किया था कि उसके खेत से ऐसी जगह मांगा था जहां से रोड जा रहा है, जहां से नाला जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे केसेस थे। एक ही जगह पे 2 लोगों से 3 लोगों ने किया हुआ था क्लेम। कुछ एरिया ऐसे मिले जिसमें कि 2005 में, आप देखिए लेफ्ट साइड में जंगल है, राइट साइड में उन्होंने काट डाला था। ये सारे जो हैं दे कुड बी checked and they were denied such kind of a claim. सबसे दिक्कत होती थी जहां पे ग्रासलैंड्स थे। तो ग्रासलैंड्स पे भी क्या है, अपने नॉर्मली आदमी लोगों की जो, या मनुष्य की जाति की जो एक फीलिंग है कि हम खेती करेंगे तो चौकोर करेंगे। तो जहां भी देखिए चौकोर, राइट साइड में आपको थोड़ा सा सिग्नेचर चौकोर चौकोर मिल रहा है। तो दे वर ऑल cultivations later than 13/12/2005, and that was also sort of denied. इतना ठीक ठाक चल रहा था। 2012 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने रूल्स को अमेंड कर दिया, और उसके बाद कहानी बदल गई। रूल्स में इन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज होता है, ऐसा ही है कि जो बड़े पावरफुल लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो गलत लोगों के उसके साथ मिल जाते हैं। जो शरीफ थे बेचारे, वो ये कोने में बैठे हुए जंगलात में कहीं होंगे, उनको मिला। बट बहुत सारे लोग जो है, दे स्टार्टेड गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and they got the rules
अमेंडेड, ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसमें उन्होंने ये अमेंड करके लिख दिया कि सैटेलाइट इमेज का एविडेंस कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट एविडेंस and it will be only to support some other evidence if needed. Supportive. So, evidentiary value of satellite image was reduced through this. दूसरा उन्होंने क्या किया कि ग्राम सभा का पहले 2/3 होना चाहिए था कोरम, उसको हाफ कर दिया। तो धीरे धीरे उसको काफी रिलैक्स कर दिया इस तरह से कि जो इंटरेस्टेड लोग जो ऊंची पहुंच वाले हैं वो दे कुड एंटर, and they unfortunately started entering. And most of the state may, not only in Maharashtra, but there were other states also which followed suit in terms of use of satellite image. They also started getting discouraged. And obviously, after 2012, 13 May, I was shifted from there. And then the satellite image का issue इस तरह से bundle के अंदर बंद हो गया, which was supposed to be helping in good decision. So it was rolled into some kind of a carpet. And बाद में इसलिए जब बाकी स्टडीज जब हुई, तो मैं जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला गया, देन आई सेड कि लेट अस स्टडी हुआ क्या है. So in that study, these kind of situations were found, very disturbing ones. जिसमें आप देखिए ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल सिग्नेचर वो दिख रहा है आपको कि बाकायदे वो जंगलात का सिग्नेचर है. ये देखिए, ये आपको खेती का सिग्नेचर है, वो इधर आ गया, देखिए इधर आ गया. So this thing started gradually in a big way. Some cases you can just see on the satellite image, on the Google Earth also, how forest started being removed from areas. This was a sanctuary, still is a sanctuary. Yeah, all red dots, they are all illegal ones, जो कि उन्होंने किया था. Fortunately, all these red ones जो गलत किया था वो सब मध्य प्रदेश से आए थे. Just north में मध्य प्रदेश है. So they could be thrown out from this place. So बच गई sanctuary. हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के होते तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि कुछ रिमूवल हो पाता कि नहीं. इसी तरह से जैसा मैंने दिखाया था पहले कि वो सारे के सारे निकालने हैं, ये कुछ एरियाज उनको जहाँ मैनेजमेंट के लिए दिए गए वहां पे उन्होंने क्लियर फेल कर दिया, कटाई इतनी कर दी कि वो आज तक ग्रो नहीं कर पाया है. तो इस तरह की चीजें, अब मुद्दा ये बनता है कि ठीक है, वी गिव राइट्स, but empowering and then also making them feel that there is something which they have to follow, the rules, regulations. And it's not that they are the only stakeholders. The whole world, in fact, becomes a stakeholder today after the climate change issues are coming up. These are some of the paper cuttings where the left one is a good one in the sense that the villagers themselves started shouting against encroachments and wrong allocations of lands to illegal people. But right side में ऐसे ही cases में the forest department and the revenue department, lowest functionaries, they were sort of sacrificed, जबकि गलतियां कहीं और थी. So post implementation अब blame game का issue हो जाता है कि भैया आपने सही किया था, नहीं आपने किया था, किसने किया था वो चल रहा है और चलेगा. Politicians use it very well wherever they go. In all these elections, FRA is an issue. And जब तक कि इलेक्शन नहीं आता है तब तक बोलते हैं कि भैया शांति से तुमको जो करना है करो, हंगामा करके मत करो. So can't you do this in a more polite way that I am completely ignorant or I can ignore? This is the normal time situation, but major political tool at all times of elections. अभी ओडिशा में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है that they will be giving n number of फॉरेस्ट राइट्स. झारखंड में इशू किया पिछले 4 दिन पहले कि 40,000 केसेस देने हैं अपने को, क्लियर करने हैं. राजस्थान इलेक्शन के इस मोड में था. तेलंगाना में दे वेंट एंड गिव मोर देन 1 लाख ऑफ हेक्टेयर्स. तो इस तरह की चीज, दिस हैज बीन नाउ यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल. आज ये दीज आर द फिगर्स. तकरीबन 45 लाख क्लेम आए हैं. उनमें से
जो फाइनली अलाउ हुए हैं वो तकरीबन हाफ हैं। सो 50% के करीब हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही रेंज में हुआ है। सो 50% ऑफ द क्लेम्स आर नॉट लीगल, दे हैव टू बी रिमूव्ड। सो रिजेक्टेड क्लेम्स का क्या किया जाए, दैट बिकम्स द रियल इशू कि ग्राम सभा हमको मदद करेगी क्या निकालने में। बिकॉज दैट लैंड अगर आपने नहीं निकाल सकते हैं तो ये एक्ट लाने की जरूरत ही क्या थी, जाने देते भाई। एंड वी वेंट, there were stakeholders who went to the Supreme Court also. 2008 से एक सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, जिस साल ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। बाद में 2019 में ये हियरिंग को आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि तकरीबन 16 स्टेट्स के उन्होंने लोगों ने दिए थे एफिडेविट। उन्होंने कहा कि इनको जो गलत है उनको निकालो। विद इन 15 days द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मेड एन अपील सेइंग कि साहब ये जो हुआ है उसमें गलत ठीक से नहीं हो पाया है, इसीलिए इसको आप अपना ऑर्डर स्टे कर दीजिए। यानी हमने जो रिजेक्ट किया है वो ठीक से, वो गलती से रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि भैया जिसने गलती की उसको कुछ तो करो, नो। उन्होंने सिर्फ स्टे कर दिया अपने ऑर्डर को, और दैट वाज 2019। आज तक वो नया डेट नहीं आया। सो दिस इज द सिचुएशन, एंड विद एवरी इलेक्शन ईयर it's starting becoming difficult. So saving forests, you have to break your head somewhere. So the only thing is try whatever you can. You can go to the court, left side top. ये नीचे कुछ ex officers ने PM को लिखा है. We don't know how much it will really be successful, but the point is कि one can be very positive in terms of empowering local people, giving them rights, but then the control systems, the way how to use those rights, who will really sort of tell them, and who will control? Because unless there is a control at that level also, you know how the democratization at the lowest level is working. In many schemes, many places, you will find that there are problems. But this is the thing that we have lived with, that never lose hope. One day you will thank yourself for not giving up. So we are not giving up, not just as a forester, but also as a sympathizer of the tribals, for the sympathizers of the tribals who are eligible and who are really genuine ones. Thank you. Pankaj Jha has a question. So yes, unmute yourself and please ask the question, Pankaj. Okay, thank you sir for the wonderful presentation. मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट में हूँ और वहाँ पे फॉरेस्ट फायर पैराडॉक्स करके होता है, वाइल्ड फायर पैराडॉक्स, जो कि रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी वाइटल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि अगर एक एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मैं रिस्क को दबाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो रिस्क उभर के आता है, और ये मेटाफर आता है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर से, कि उसका है कि अगर एक सर्टेन लेवल तक अगर मैं फॉरेस्ट के फायर को अवॉइड करता हूँ या उसको दबाता हूँ तो वो अल्टीमेटली कहीं एक लार्जर फॉरेस्ट फायर के रूप में आ जाता है। तो और ये बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबली, जो बहुत इवन यूएस में भी और बहुत सारी जगह। इसका आप चूंकि फॉरेस्ट के काफी एक बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप मुझे जरा, मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे, ये फायर कैसे थोड़ा रोकने पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बल्ज हो जाता है। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन काम जरूर किया है फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट फायर से फाइटिंग भी की है। वी कॉल इट फॉरेस्ट फायर फाइटिंग। और होता यह है कि जब शुरुआत फायर की जो होती है वो एक माचिस की तीली से होती है, नथिंग बिगर देन दैट, और वो बहुत छोटे से एरिया में होती है। या कभी आपने कोई जो रेवलर्स हैं वो गए खाना पका रहे थे रात में, उन्होंने छोड़ दिया जलता हुआ छोटा सा सिगड़ी छोड़ दी, वो फैलता है थोड़ा सा। बट द पॉइंट इज कि फॉरेस्ट फायर एक बार जब फैलता है तो वहां पे जो विंड का एक सिस्टम क्रिएट होता है, दैट गिव्स लॉट ऑफ इम्पेटस टू द फायर, वन। नंबर टू, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन। फॉर्चुनेटली इन झारखंड और हमारे जो सेंट्रल इंडिया वगैरह में है, वी डोंट हैव ग्राउंड फायर्स,
लेकिन जो हिमालय के साइड में है, जहाँ पे कि चीड़ है, पाइन है, जिसमें कि ऑयल होता है, वहां पे क्राउन फायर्स होते हैं इस कदर कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप कैसे बचोगे, और एक्चुअली देयर आर सो मेनी कैजुअलिटीज। तो इसीलिए उतना छोटा सा एक तीली, वो तीली जो वहीं के लकड़ी से बनी है, आपके नॉर्थ वाले जो चीड़ पाइन के या किसी लकड़ी से उससे बनी है, वो उसके कारण छोटा सा आपने अगर छोड़ दिया तो इट बिकम्स टोटली अनमैनेजेबल। और सबसे बुरी फायर होती है स्पेशली सेंट्रल इंडिया वगैरह में, बैम्बू के एरिया में फायर। बांस के जंगल में अगर आग लग गया तो जो बांस के नोड्स होते हैं, आपने देखा होगा थोड़े थोड़े दूर पे गठान जो होती है, वो गर्म होता है वो, और गठान के बीच का पोर्शन जो है वो ब्लास्ट करता है, बिकॉज देर इज एयर इनसाइड एंड दैट ब्लास्ट लाइक ए बॉम्ब। और वो एक जगह यहाँ रहेगा, वो फट करके जाएगा अनदर 20 मीटर्स, वहां का बांस फटेगा अनदर 20 मीटर्स। सो इन नो टाइम द होल फॉरेस्ट बिकम्स इज डिवास्टेटेड। इसीलिए वो कथा आई होगी कि भाई एक वो फॉरेस्ट फायर का जो एक सर्टेन लेवल है या थ्रेशोल्ड है, वहां के पहले ही उसको भैया दबा दो। वैसे ये चीज जिंदगी में भी बहुत जगह पे आती है कि शुरुआत में अगर आपने रोक दिया तो वो बाद में ऐसा नहीं है कि आके माँ के कान काट देगा बच्चा झूठ बोलने वाला। एक कहानी थी पुरानी। तो दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, Sarita ma'am, I think wanted to speak. I also wanted to comment and ask a question, but Sarita ma'am, yours first. Yeah, this was great, sir. So I do have a question. So there is a website is globalforestwatch.org. Does India actually uses that to look into or compare the data of like a deforestation and all that? This is a global. This is not just for India. It's from US and I mean around the world. Does like your department ever use this data? Yeah, I'll tell you, we use even another data is from Forest Survey of India. That is one data that we use. Apart from that, there are geoinformatic units in most of the states. और आप जिस लेवल की बात कर रही हैं ना, उसका जो एक you can say the resolution part that is used for sort of mega decisions, बड़े decisions के लिए लगता है। बट जो हमारे यहाँ पे FSI का है, फॉरेस्ट सर्वे इंडिया का है या स्टेट्स का है, they are very high resolution data also. You can also get that from NRSA, National Remote Sensing Agency. So वहाँ का data use करके we have used it for making working plans, that is management plans, one. Number two, we also assess the quality of forest, the density of forest, and then have a comparison every third year. एक रिपोर्ट निकलती है, it's called ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। वहाँ पे भी हम लोग इन सब चीजों को साथ में यूज करके वहाँ यूज करते हैं। सो इट इज नॉट ओनली यूज्ड इन preparing reports, comparing with international sort of data, but also for management, which is the plus thing. But ultimately point ये है कि किसी भी फॉरेस्ट का खाद जो है ना, फर्टिलाइजर, वो बोलते हैं फॉरेस्टर का बूट होता है। आप जब तक वहां पैदल नहीं जाएंगे वो जंगल कभी मैनेज नहीं होगा। बाकी चीजें ठीक है, हमको सपोर्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है हर चीज, बट वंस यू गो टू द फील्ड, नथिंग लाइक इट। एंड देयरफॉर वी ऑलवेज फोर्स पीपल कि आप फील्ड में जाओ। बट वी डू यूज द डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर वेरियस पर्पसेस। देयर इज ऑल्सो ए फायर अलर्ट सिस्टम दैट वी हैव। पूरे इंडिया का फायर मैप आता रहता है। जैसे आप जनवरी के बाद देखोगे तो हर एक दिन आपको दिखेगा कि अच्छा आज इस पर्टिकुलर एरिया में फायर आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ बुझ गया। दैट इज ऑल्सो डन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरह की चीजें हैं, बट वी डू टेक डेटा फ्रॉम देयर ऑल्सो टू हैव अ मच बेटर मैनेजमेंट, यू नो। एक मैक्रो एंड माइक्रो दोनों को मिला करके करते हैं। Is it okay? Ma'am, I think you are muted. Can you unmute?
Sorry. speak. I think according to this data, looks like a lot of forests are gone, basically. So that the difference is, you Mhm. see, the FSI, Forest Survey of India, is talking of the forest cover. And forest cover may be two aspects. One is within the designated forest area, which is legal forest area. And there is another cover, which is called tree cover, which is outside the designated forest area, legal forest area. इन दोनों को मिला करके जो आप देख रही हैं, वो बढ़ा हुआ दिखता है. Oh, okay. कुछ 2000, Yes, है ना? they mentioned that. They mentioned that as Yeah, exactly. So that Yeah. that is why the difference, and that is political basically, because वो गवर्नमेंट के लेवल से अगर ऐसा रिपोर्ट लेके गए तो मंत्री जी बोलेंगे अरे यार देखो कल को निकाल दिए जाएंगे, तो तुम फॉरेस्ट कवर की बात करो. But at the Ashutosh? level, at the management level, we can't really we can't really manage in terms of just the just the forest cover. It has all stories of forests that come into management. So इसलिए वहाँ, Ashutosh, you can ask your question now. Ashutosh? No, let him finish. Sir. Let him finish. yeah, I think Yeah, I finished. He finished. The difference I have told her why it is so कि वहाँ पे बड़ा कम भी होता दिखता है, यहाँ पे हमारा थोड़ा बड़ा हुआ दिखता है. नेशनल इमेज को थोड़ा करने के लिए Okay. चलता रहता है. Very nice. Sir, mine is more of a comment than a question, and of course, there is a very small question also associated with it. जी जी. Primarily because I can relate to what you mentioned related to GIS. I have limited experience on working on GIS, basically in the field of imagery intelligence we used to use. And I was really amazed to hear that in year 2005, using Cartosat data, which has just about 2.5 meter resolution, you were able to do wonders. Sure. I will call it wonders with the local effort. You didn't get any support from outside. You didn't import any software. You didn't import any data. Why I'm saying importing data is important, because the imported data used to be very costly. Of course, we used to get submetric resolution, but that data was very expensive, and you didn't get the current data. You get the data which is 1 year old or something like that. And here you use the indigenous data, and using indigenous resources, you are able to get an accuracy of 7%, you mentioned. Yeah. So 7% accuracy with 2.5 meter resolution is exceptional. That is what I would say. Now, having said this, now my point is that we are in an age where we have not only the submetric resolution, like everyone has got a GPS in his pocket, the mobile phone and the Google Map and everything else. Now with all this, the evidence which will be produced by the GIS based system, which will be much more authentic, much more current, and almost real time. Now the point is that you said that in 2012 the law was amended, and it was said that the GIS data can only be a supportive evidence. It cannot be the main evidence. So yes, point taken regarding politics and everything. But now we are living in a system where everywhere we go for, even police works on forensic evidence and technical evidence and things like that, and even courts accept this. So what could be the way forward? I mean, like forest department, you are the major stakeholder other than the actual users, tribals. And isn't there a way that the forest officers project this to the government that let's do this? Yeah. There's no other way. So has there been any emphatic statement like this from the upper echelons in the department? Abhi, to be very frank, regarding the use of this data, what is happening is that forest department ko inhone they have kept them as a stakeholder in the committee. बाकी कहीं पे इन्होंने इन्वॉल्व किया नहीं है. And the main focus is कि भाई ट्राइबल डिपार्टमेंट is the department जो कि हैंडल कर रहा है मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, to the extent that when there was a clarification issued by the principal chief conservator of forest, who is the head of the forest force, to his subordinates कि भैया ये केस जब आए तो ये करना है आपको,
That was also objected to by the state level monitoring committee headed by the chief secretary. उन्होंने बोला इस एक्ट के बारे में एक शब्द आप लोग नहीं बोलेंगे मीटिंग में. He forced them to withdraw it. लेकिन चूंकि हम लोग आई वॉज द मेंबर सेक्रेटरी, तो मैंने किसी तरह से उसको, हमने कहा सर ये बहुत हंगामा हो जाएगा. आई मीन दैट इज विद इन हिज डिपार्टमेंट, दैट इज ट्राइंग टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट विच इज एंटाइटल्ड टू. काफी मुश्किल से वो बचा रहा. बट एक जनरल परसेप्शन ऐसा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं करेगा. दे जस्ट हैव टू कम एंड सिट इन द मीटिंग एंड जो है अवेलेबल एविडेंस वो हिसाब से करिए. यू आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ decision making by using a certain evidence. Evidence has to be given by the person, not by the member of the committee. यहाँ तक चलता रहता है. So there is a lot of pressure जो कि ये बोलता है कि आप दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए. और अब जो 17 साल हो गए हैं, अभी भी अगर कोई आ रहा है एप्लीकेशन लेके, इसका मतलब वो फ्रॉड ही होगा, नथिंग एल्स. 17 साल से किसी को नहीं पता हो कि भैया ये एक्ट आया है और ऐसे कर सकते हैं. But they are being favored by people who really matter, or they who call the shots. वो एक बेसिक प्रॉब्लम है. एंड दैट इज वाई यू नो बहुत ही एम्फेटिकली कोई पीसीसीएफ, आज तो ऐसे ही माहौल जिस तरह का है, कोई भी पीसीसीएफ फाट से लिखता नहीं है. हम तो कम से कम ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स आई हैव विजिटेड एंड गिवन लेक्चर्स कि भैया तुम कम से कम अपना लिख दो कि भाई अमुक कारण से हम एग्री नहीं करते हैं. जिस बंदे ने लिखा ही हैज बीन ट्रांसफर्ड ओवरनाइट. तेलंगाना में अभी उन्होंने जो दिया उसमें तो अभी मेन स्टेक होल्डर में क्या हुआ है कि जो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स है ना, दे आर गोइंग टू द कोर्ट. हम लोग खुल के बोलते हैं भैया तुमको सपोर्ट चाहिए, हम लोग हैं. अब इवन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी डाइल्यूट किया उन्होंने, उसके अगेंस्ट में 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वी हैव गॉन टू द कोर्ट. दैट इज द ओनली थिंग वी फाइंड कि कुछ जहां कुछ हो सकता है. तो इसीलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना बहुत बढ़िया चीज आ गई है आज, टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी चीज आ गई है. अब प्रॉब्लम यही है कि भाई आप हु विल बिल्ड द कैट वाला हिसाब है. आप कोर्ट में भी लेके जाओ बिकॉज देयर आर एविडेंसेस कि हाँ साहब ये जंगल था और इसमें बाद में गलत दिया गया है. इस एक्ट में प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ही नहीं है. यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, रिट में डाल दो कि भैया ये ऐसा है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन वेरी यू कैन से क्लैंडस्टाइनली built against the conservation that we feel. वो एक तकलीफ होती है हम लोग को भी. बट फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर्स जो फील्ड में है, दे आर टेकिंग स्टैंड. अभी आपका बोकारो डीएफओ ने हमको फोन किया, सर हमारे लोगों का क्लास ले लीजिए पूरा. आई टुक अ लेक्चर फॉर ऑल ऑफ देम. सो इट बॉइल्स डाउन टू इंडिविजुअल ऑफिसर्स. बट एट द टॉप लेवल, टॉप एशलन की जो आपने बात की ना, वो भैया जिस दिन वो लिखेगा वो दूसरे दिन वो दूसरे एशलन में चला जाएगा. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे. बट यस, वी आर गोइंग टू सफर इफ वी कंटिन्यू लाइक दिस. वी टोटली एग्री. हम लोग बात करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. वी राइट इन पेपर्स. आई हैव बीन राइटिंग इन द पायनियर क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑन दिस कि क्या चल रहा है, कैसे सुधारना चाहिए पर्सनली. इस तरह की चीजें चल रही हैं, बट नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑलमोस्ट कंडेम्ड इन द सेंस दैट दे आर कॉल्ड एंटी ट्राइबल्स, एंटी पुअर. उस इमेज के कारण भी लोग को लगता है यार करना क्या है. और कुछ लोग तो बोलने लगे हैं भैया सरकार कहती है ना, सरकार कल को बोलेगी पूरा काट के बेच दो तो बेच देंगे, हम तो नौकर हैं. हमने कहा नौकर के अलावा भी कुछ हो तुम, उस पर चलता रहता है. बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. और उस समय भी आई टेल यू जो 2.5 वाला लिया हमने और 2 ही इमेजेस सेट के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लिए, दैट वाज आल्सो बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हम सक्सीड करेंगे ही. अगर हमने सक्सीड नहीं किया होता उस समय के 42 लाख और अनदर 30 लाख या 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद, तो अरविंद झा अभी रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन से दे रहे होते पैसे उसको. या किसी भी गवर्नमेंट का आर्मी कहीं भी, इट्स ईदर ए मेडल और चार्जशीट, ये हो जाता है. हाँ, तो उस चक्कर में भी हमने बड़ा सेफली थोड़ा प्ले किया. हमने कहा यार देखो एक ब्लैक एंड व्हाइट ही रखो, अदरवाइज तो एक से एक उस समय भी अवेलेबल थे. राइट. थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस, कमेंट्स? एक बार मुझे जहाँ तक याद है, पता नहीं ये कंफर्म रिपोर्ट है या नहीं, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी
इसरो के सैटेलाइट का इमेज मंगवाई थी कि एग्रीकल्चरल, किसी ने एग्रीकल्चरल इनकम के लिए क्लेम किया था कि ये एग्रीकल्चर का इनकम है। तो उसने लास्ट में जब पता चला कि ये सारे फॉर्जरी वाले डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए हैं, तो एट लास्ट उन्होंने इसरो से मंगवाया सैटेलाइट इमेज, यहाँ रियली में एग्रीकल्चरल कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। तो पता नहीं ये कंफर्म रिपोर्ट है या नहीं, लेकिन सर सर्कुलेट हुआ था। दैट बिकेम डिसाइसिव। अनफॉर्चुनेट क्या है सर कि इस तरह से खराब हो चुका है हर लेवल में आपका ऑनेस्टी, एथिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर लेवल में। नॉट दैट वी अर्लियर थॉट कि भाई पंचायती राज में हो जाएगा, बड़ा बढ़िया हो जाएगा, या दैट वाज द आइडिया कि भाई आपका इतना कम पैसा नीचे तक पहुंचता है। राजीव गांधी ने कहा ऐसा करो, यहाँ से डायरेक्ट पैसा गांव को दे दो। अब गांव तो लोग बैलगाड़ी से बोलेरो की बात करते हैं फॉर ऑल दीज पीपल हु आर मैनेजिंग द फंड्स। यस। और अब क्या हो गया है कि उस समय एक फॉरेस्ट गार्ड था, उसको अगर उसने किया होता ऐसा जैसा मैंने दिखाया कि वो जंगल पूरा साफ कर दिया, वो बेचारे की नौकरी गई होती। आज आप ग्राम सभा के अगेंस्ट क्या कर लोगे? ये पोजीशन है, ग्राम सभा में 372 लोग हैं। तो प्रॉब्लम गवर्नेंस की बहुत बेसिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। डेमोक्रेटाइजेशन इज वेरी गुड, बट मुद्दा है कि उसको कंट्रोल कैसे रखा जाए। दैट इज वेयर वी आर फेलिंग, बिकॉज फंडामेंटली कई चीजें हम में कल्चर में इफ आई कैन वर्ड यूज दैट वर्ड, सॉरी, वैसा गड़बड़ा गया है ना। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए भाई, तो वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बड़ा डिफिकल्ट है। स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, जहां से ना वोट मिलता है ना कुछ मिलता है, तो ये उनको वोटर्स इसी में दिख रहे हैं कि लो भैया जमीन दे रहे हैं तुमको। Are you allowed to say all this? Pardon me? Are you allowed to say all this while you're working for government? I mean, When I was working for government, no, I retired now. Yeah, but in a better language, we used to tell the bosses. उस समय के bosses बड़े tolerant थे, let me tell you. Okay. उन्होंने हमारे जैसे लोग को tolerate किया है। Yes. और शरद, if I can say so, शरद पवार एक बार आए गढ़चिरौली में। I was posted in गढ़चिरौली, नक्सलाइट एरिया। अब वहाँ के कलेक्टर साहब बड़े दुखी हुए कि अरे यार वो आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। उन्होंने एक पुलिस वैन भेजी और एक रास्ते में बोला कि गांव जहां भी मिले वहां पूछ लो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कल शरद पवार साहब को बताना। अब पुलिस वाले जहां भी घूमे वहां पे नेचुरली कोई किससे दिक्कत है, पुलिस के खिलाफ तो बोलेगा नहीं कि आप ही हमको सता रहे हैं। और वहां सबसे गरीब बंदा जो है वो फॉरेस्ट वाला, अरे साहब जब जंगल से लकड़ी लाते हैं तो रोकता है, अरे साहब वो वैसे मुर्गी मांगता है, वॉट एवर। नेक्स्ट डे की मीटिंग में ऑन द डायस ही स्टार्टेड सेइंग, शरद पवार जी, he said कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कारण ये पूरा नक्सलाइट प्रॉब्लम है, हमको झेलना पड़ रहा है और इतने पैसे बर्बाद करने पड़ रहे हैं हमको नक्सलाइट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। माइंड यू आज तक नहीं हुआ ठीक, लेकिन आई वॉज वेरी अपसेट। आई वॉज जस्ट 4 साल हुई थी नौकरी को, 5 साल हुए थे। मैंने कहा सर, बगल में मेरे कंजर्वेटर साहब थे, हमने कहा सर 2 मिनट बोलूं क्या? बोले अरे ऐसे पब्लिक में नहीं बोला जाता है। आपस में बड़े दुखी थे हम। बाद में उन्होंने बोला जो करना है लिख के दो। I wrote a letter, डेमी ऑफिशियल लेटर टू द सेक्रेटरी। आई सेड कि साहब सीएम साहब ने ऐसे ऐसे बोला है, इट इज नॉट करेक्ट, और मैं जो है आज के तारीख से मेरे को जो आपने पुलिस प्रोटेक्शन दिया है वो वापस कर रहा हूँ। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द सेविंग्स फ्रॉम माय साइड सो फार एज नक्सलाइट प्रॉब्लम का ये इज कंसर्न। आई रोट। अरे वहां से बड़े बड़े लोगों के फोन, क्या था तुम पागल हो यार। फाइनली आई टेल यू, शरद पवार साहब ने, हमारे आईएफएस एसोसिएशन की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाड़ी हमको समझ में आज तक नहीं आया, और वहां कुछ बोल दिया था हमने, प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट, ही सेड इन दैट मीटिंग। तो ऐसे लोग उस समय थे। तो एनीवे हम लोग का वो थोड़ा टाइम भी अलग था, बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू आर वेरी श्योर व्हाट यू सेड इज करेक्ट। आज के डेट में आप नौकरी में रहते हुए तो नहीं बोल सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद के लिए भी वो कुछ आ रहा है कि ज्यादा लफड़ा करोगे तो पेंशन रोक दिया जाएगा। Pension will get affected. तो वो ठीक है, देखेंगे, उतना तो अब ईश्वर की कृपा है।
Because this is going to be on YouTube and free for everyone. No problem. No problem. No I problem. think we don't have a risk here because as we discussed with Arun sir earlier also, that whatever we discuss here is nothing that cannot be spoken on a public platform. So Yeah. Yes. And by a public. by a मैं public. पब्लिक सर्वेंट था, अब सर्वेंट नहीं हूँ, by the way. अब पब्लिक हूँ. Just one thing, Arvind has not spoken a single word. I have read books written by him. I read all the articles. Actually, he has only spoken 10% of what he writes openly and including the book. I mean, not that he's a friend. Of course, he's a dear friend, but I think I needed to interrupt here. He has not even spoken 10% of what he has been writing in his books in his articles. And one line from Arvind, I mean, Arvind, there are maybe 0.001% who take a stand and stand on that. They will be the ones before they die will be proud that they took a stand. So I'm proud of you that you have been taking a stand. नहीं, अरे. Thank you. So basically, I'll just summarize with what I started, and willy-nilly, it happens that I'm ending with what I started. I mean, people Sir, like before Arvind. you summarize, I think Mr. Dipankar has something to say. He has raised his hand. Mr. Dipankar. Dipankar, oh yes, I just saw it. No, just a small query. You write in Pioneer. Why is it restricted to Pioneer only? I mean, others are not interested? You see, if you write on conservation issues, if you write anything which criticizes government, and also if you write something against the way the FRA is being implemented, they don't publish. Oh. Pioneer mein, fortunately, one of my seniors, he had been publishing. So he encouraged me कि भाई चलो तुम लिखते हो, आ जाओ हमारे साथ लिखो. Otherwise, normally बहुत difficult है आज के डेट में आप publish होना, I tell you. But that is what it is. क्या कर लेंगे आप और हम? Right. But thank you so much. I mean, I didn't know any of it, and I know so much of it now. Thank you so much, sir. Thank you too. Thank you. Sir, Arun sir, back to you. Sorry. No, I mean, nothing. I mean, just people like Arvind or Sarita ma'am or Dr. Chaudhary or Dr. Jha, when they speak, I mean, I have been personally also requesting they speak what they have lived, and that cuts lots of ice. I mean, it from heart to heart. And the last line is that this entire session or entire platform was for the younger ones. And by that time, by default, I had defined younger ones between 25 to 45. Now, when we have Dr. Sharan, 72 younger ones. Somewhere, Arvind, जो आज आपसे मैं बात कर रहा था, आज ये कर रहा था, I'm just quoting Aurobindo. जो 4 स्टेज हम लोग की लाइफ का है, matter, life, mind and spirit. So mind is divisive and spirit is uniting. People say gap क्या है? तो gap knowledge का, ignorance का ही gap है. So when we hear people, or second thing, people say हमको, why should I read history? Why should I study geography? उसका आंसर यही है कि माइंड और स्पिरिट के बीच का गैप तभी कम होगा जब आपके माइंड का सेट बड़ा होता है. अभी हम लोग के माइंड के छोटे छोटे सेट है, किसी का ओनली हिस्ट्री, ओनली मेडिकल, बट वंस वी हियर अबाउट फॉरेस्ट, वंस वी हियर अबाउट लैंग्वेज, वो सेट एनलार्ज होता है. और इंशाल्लाह शायद वो एनलार्ज होकर के यूनिवर्सल सेट बन जाए मैथ के लैंग्वेज में. तो ये छोटा सेट अगर वो यूनिवर्सल सेट बन जाए तब वो स्पिरिट बन जाएगा. तो आप लोगों की कृपा से हम लोगों के माइंड का जो छोटा छोटा सेट वो बड़ा होता है. आई होप द यंगर वंस रियलाइज दैट something as disinteresting or as dry as forest definitely is going to enlarge your mindset. Like Dipankar said, he did not know, now he knows. This is the most important reason, क्या बोलते हैं French में, raison d'être, reason why we are here. So Arvind, thank you very, very much, boss. Thank you very, very much. Thank you, sir. Hopefully, maybe a few weeks back, we shall have you again. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody. So,